Good afternoon, all of you. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Where are the students, beta? पता नहीं मैम लास्ट क्लास में भी नहीं थे. 4 ही बच्चे थे बस. यस मैम. क्यों? कहाँ चले गए? पता नहीं मैम. सुबह तो थे, डीएसपी में भी थे और उसमें प्रोबेबिलिटी में भी थे. हाँ मैम. अटेंडेंस चेक करी थी क्योंकि मैंने उसमें थे बच्चे सारे. डीएसपी में तो मेरे ख्याल से काफी बच्चे थे. Now today we will do potential transformer. आज ये वाला यूनिट खत्म हो जाएगा. फ्रॉम नेक्स्ट मंडे क्लास होगी ना इसके बाद आपकी. विल स्टार्ट 6th यूनिट. 5 यूनिट्स हो चुके हैं ईएमआई में. पढ़ना शुरू कर दो. किसी को कोई डाउट है पूछ लो. ठीक है. Now I am sharing the screen of potential transformer with you. Now this is potential transformer. Are you able to see the screen, all of you? Yes, students, is the screen visible to all of you? Hello, hello, hello. Yes ma'am. Okay. Now, potential transformer. The potential transformer may be defined as an instrument transformer used for the transformation of voltage from a higher value to lower value. ये हमने अभी definition तो देख ली थी इसकी. This transformer step down the voltage to a safe limit value, which can be easily measured by ordinary low voltage instrument like voltmeter, wattmeter, and watt-hour meter. Now the construction of this. The potential transformer is made with high quality core operating at low flux density so that the magnetizing current is small. The terminal of the transformer should be designed so that the variation of the voltage ratio with load is minimum and the phase shift between the input and output voltage is also minimum. The primary winding has a large number of turns and secondary winding has a much smaller number of turns. Now, for reducing the leakage reactance, the coaxial winding is used in the potential transformer. The insulation cost is also reduced by dividing the primary winding into the sections, which reduce the insulation between the layers. Now, this was a construction. You can see here, उस दिन बनाया भी था आपने diagram. Now the connection of potential transformer. The potential transformer is connected in parallel with the circuit. You can see here. The primary winding of the potential transformers are directly connected to the power circuit, whose voltage is to be measured. The secondary terminals of the potential transformers are connected to the measuring instrument like voltmeter, wattmeter, etc. The secondary winding of the potential transformer are magnetically coupled through magnetic circuit of the primary windings. Now the primary terminal of the transformer is rated 400 volts to several thousand volts. And the secondary terminal is always rated for 400 volt. The ratio of the primary voltage to the secondary voltage is termed as transformation ratio or turn ratio. लिख लीजिए इसको. इसमें कंस्ट्रक्शन है आपका और कनेक्शन है. फिर टाइप्स देख लेंगे इसकी और रेशियो एंड फेज एंगल एरर्स. पहले ये लिख लीजिए. थोड़ा जल्दी लिखना. डेफिनेशन लिखनी है. जस्ट लेट मी नो. ठीक है, फिर यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए.
लिख ली डेफिनेशन, स्क्रॉल डाउन कर दो। Yes, ma'am. Okay. Just write down the construction of potential transformer. Is class done? Hello. Yes, class कर ली construction of potential transformer. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Other connection of potential transformer. Just make the diagram also. कनेक्शन हो गया।
Yes, class, connection is done. No, ma'am. Yes, class, done. Yes, class, done. No, ma'am. हो गया मैम. Now the types of potential transformers. The potential transformer is classified into two types, that is conventional wound type and the capacitor voltage potential transformers. Conventional wound type transformer is very expensive because of the requirement of the insulations. Capacitor potential transformer is a combination of capacitor potential divider and a magnetic potential transformer of relatively small ratio. The circuit diagram of the potential transformer is shown in the figure. The stack of two high voltage capacitor from the potential divider. The capacitors of two sections become C1 and C2 and Z is the burden. You can see here C1 and C2 is there. Now the voltage applied to the primary of the intermediate transformer is usually the order of 10 kV. Both the potential divider and the intermediate transformer have the ratio and insulation requirement which are suitable for economical construction. The intermediate transformer must be of very small ratio error and phase angle gives the satisfactory performance of the complete unit. The secondary terminal voltage is given by the formula V2 is equal to V1 into C1 plus C1 upon C1 plus C2. Now, ratio and phase angle errors of potential transformer. In an ideal potential transformer, the primary and the secondary voltage is exactly proportional to the primary voltage and exactly in phase opposition.
but this cannot be achieved practically due to the primary and secondary voltage drops. Thus, both primary and secondary voltage is introduced in the system. Now, first is voltage ratio error. आपने ध्यान होगा आपने कल भी यही लिखी थी. वोल्टेज एरर क्या आई थी कल करंट ट्रांसफार्मर में? लिखा होगा कहीं ना कहीं आपने. वोल्टेज रेशियो एरर क्या थी? ठीक है नहीं थी ये? Yes, ma'am. क्या था? क्या लिखा था आपने? विजय क्या लिखा था कल? आशीष क्या लिखा था? मैम वोल्टेज रेशियो तो नहीं था, लेकिन करंट रेशियो जरूर Current ratio था मैम. क्या था उसमें? Current ratio. क्या था? करंट रेशियो में क्या आया था? Current ratio था मैम उसमें KTIS minus IP upon IP. यही फॉर्मूला है. Yes, स्क्रीन पे ma'am. देखो जरा. Now the voltage ratio error is expressed in regarding measured voltage and it is given by the formula as shown. Ratio error is equal to KTIS minus IP upon IP, where Kn is the nominal ratio, the ratio of rated primary voltage and the rated secondary voltage. Next is phase angle error. The phase angle error is the error between the secondary terminal voltage, which is exactly in phase opposition with the primary terminal voltage. The increase in the number of instruments in the relay connected to the secondary of the potential transformer will increase the error in the potential transformers. Now the burden of a potential transformer. The burden is the total external volt ampere load on the secondary at rated secondary voltage. The rated burden of a PT, that is potential transformer, is a VA burden, that is volt ampere burden, which must not be exceeded if the transformer is to operate with its rated accuracy. The rated burden is indicated on the nameplates. The limiting or maximum burden is the greatest volt ampere load at which the potential transformer will operate continuously without overheating its winding beyond the permissible limits. This burden is several times greater than the rated burden. अगर आपने ट्रांसफार्मर्स अपने घर के आसपास भी देखे होंगे तो उसमें आपकी कितना वो लोड सहन कर सकता है, कितनी उसकी लोड की कितना वो ले सकता है, उसके ऊपर उसकी रेटिंग्स लिखी रहती है. आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा कि जब भी ट्रांसफार्मर पे खासकर गर्मियों में जब लोड बढ़ता है तो देयर इज अ स्पार्किंग इन द ट्रांसफार्मर. कभी नोट Yes, किया ma'am. आपने? दैट इज द बर्डन इज इंक्रीज्ड ऑन द ट्रांसफार्मर. स्पार्किंग क्यों होती है? हम अक्सर कह देते हैं लेमन लैंग्वेज में कि लोड बढ़ने से हो गई, बिकॉज आपके ट्रांसफार्मर का जो लोड डिसाइडेड है उससे ज्यादा हो गया. इस वजह से वो क्या होता है, कई बार उसमें आग लग जाती है. छोटी छोटी स्पार्किंग जो होती है, इट इज अ इंडिकेशन की लोड इज इंक्रीजिंग ऑन द विद द कैपेसिटी जितनी उसकी ट्रांसफार्मर की है. Now the phasor diagram of a potential transformer. The phasor diagram of the potential transformer is shown in the figure. You can see the units. Now where IS is the secondary current, ES is the secondary induced EMF, VS is the secondary terminal voltage, RS secondary winding resistance, XS secondary winding reactance, IP primary current, EP primarily induced EMF, VP primary terminal voltage, RP primary winding resistance, XP primary winding reactance, KT turn ratio, IO excitation current, IM magnetizing component of IO, phi M main flux, IW core loss component, B is the phase angle error. Now the main flux is taken as a reference. You can see here
The main flux is taken as a reference. In instrument transformer, the primary current is the vector sum of the excitation current and the current equal to the reversal secondary current IS multiplied by the ratio of 1 upon KT. The VP is the voltage applied to the primary terminal of the potential transformer. Now the voltage drops due to resistance and reactance of primary winding due to primary current is given by IPXP and IPRP. When the voltage drop subtracts from the primary voltage of the potential transformer, the primarily induced EMF will appear across the terminals. Now the primary EMF of the transformer will transform into secondary windings by mutual inductions and converted into secondary induced EMF ES. Now this EMF will drop by the secondary winding resistance and reactance, and the resultant voltage will appear across the secondary terminal voltage, and it is denoted by VS. Now applications of potential transformer, it is used for a metering purpose, for the protection of the feeders, for protecting the impedance of the generators, for synchronizing the generators and feeders. The transformers, the potential transformers are used in protecting relay schemes because the potential coils of the protected device are not directly connected to the system in case of the high voltage. Therefore, it is necessary to step down the voltage and also to insulate the protective equipment from the primary circuit. Now you have to write down from here. टाइप से लिखना है ना, यहाँ तक लिख लिया आपने. Just write down type of potential transformer. थोड़ा जल्दी करना so that you can write all the terms.
डन, स्क्रॉल डाउन कर दो। नहीं मैम। कर दो मैम। डायग्राम भी बना लो कैपेसिटर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। डन, स्क्रॉल डाउन कर दो। नहीं मैम। डायग्राम बना के आगे कर। हम डायग्राम में टाइम लग रहा है। हो गया मैम। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, इसीलिए डायग्राम और न्यूमेरिक इस पे फॉर्मूला जरूर लिख लो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वैल्यूज दी हो, V2 निकालना हो 50 को, अगर आपका ये वाला पेपर भी होता है MCQ तो 50 क्वेश्चंस आएंगे। MCQ वाला पेपर तो आपने दे रखा है ना? हाँ मैम। पैटर्न तो क्लियर है आपको? यस मैम। स्क्रॉल डाउन कर दूं रेशियो एंड फेज एंगल एरर्स पर? मैम बस फॉर्मूला लिखना है हाँ उसमें। हाँ, लिख लो फॉर्मूला। हाँ मैम कर दो। हाँ, मेन पॉइंट्स, मेन चीजें लिख लिया करो ना।
जैसे वोल्टेज रेशियो एरर लिख लो और फेज एंगल एरर, इसमें रेशियो एरर का फॉर्मूला लिख लो, फुल फॉर्म लिख लो केटी की एरो लगा के। रेशियो एरर कैलकुलेट करने के लिए बोल भी सकते हैं कि जैसे केटी और आईएस और आईपी की वैल्यूज दी हो तो रेशियो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप में। तो फिर हो गया फेज एंगल एरर। नहीं मैम, मैम पूरा ही लिख रहे हैं, वो हमारे पास बुक तो है नहीं, बाद में दिक्कत हो जाएगी। चलो लिख दो। वो किसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की एक ही शादी है। अगर आप लोग कॉलेज जाओ तो उसमें बहुत कॉपीज हैं, इशू करा लो एक बुक। हो गया मैम। ओके, मेन तो आप ये है फेजर डायग्राम बना लो पहले तो, ये इम्पोर्टेंट है फेजर डायग्राम। बना लो तो बता देना, मैं स्क्रॉल डाउन कर लूंगी। ऑन द मीनवाइल आई विल टेक योर अटेंडेंस। आशीष शुक्ला, प्रेजेंट मैम। अनीश रंजन, अनीश इज देयर नॉट, निधि, पारस बत्रा, पीयूष मिश्रा, Yes, ma'am. प्रभा, Yes, ma'am. प्रद्युमन, राहुल गौर, Yes, ma'am. राजीव कुमार, रंजन। हो गया मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, मैं नीचे कर लेती स्क्रॉल डाउन। ऋषभ रॉय, Present, ma'am. सौरभ, Yes, ma'am. विजय सिंह, प्रेजेंट मैम। यश शर्मा,
Yes, is there or not? Phasor diagrams are important. Now from Monday we'll start new unit, that is transducers. Call down कर दूं? No, ma'am.